First of all, we are starting in the reverse order. I'm going to be solving Feb March 2024 first. Okay, so the first question is on improper integral. We have an integral sign and the fraction is 2 upon x square. अब आपको इसको integrate करना है from 3 to the highest power is the upper limit is infinite. So whenever you come across these questions, try to replace infinity with a variable x. 2 upon x square dx. Now integrate 2 times x to the power of minus 2. Okay, so the integral of 2x to the power of minus 2 would be, you raise 1 to the power divided by the new power. The limits are going to be from 3 to x. Then you substitute it's minus 2 upon x. The lower limit is 3 and the upper limit is x. You substitute the upper limit first. So that's going to be minus 2 upon capital X. That's the answer of the upper integral minus the answer at the lower integral, which is minus 2 upon 3. Minus 2 upon x plus 2 upon 3. Now, what was x? X was infinite. So if you have an infinite value, when x approaches an infinitely large value, what will happen to this fraction? X is in the denominator. When the denominator approaches an infinitely large value, becomes smaller. It becomes smaller and smaller, and Rafi, the value is going to go tend towards to the value of the fraction is going to tend towards to 0. So minus 2 upon x will tend towards to 0. So what's the final answer going to be? If this will become 0, then the final answer is going to be a finite value, that is 2 upon 3. Please note down the working. Sir, is this the February-March paper you said? February-March 2024 paper. Let me know when you guys are done. You can reply in the chat box. I'll go question by question, okay? Let me know when you have done with noting this down. Rafa and Hasina, are you done? Yeah, sir. Okay. Done? Okay. Now, question number 2. The diagram shows part of the curve with the equation y equals to k sine half x, where k is a positive constant and x is measured in radians. The curve has a minimum point A. State the coordinates of point A. We need to identify the coordinates of point A, and this is the minimum point. What does this tells you? What does the value of half tells you? How many cycles are going to be there in 2 pi? If you recall the transformation chapter, half x means how many cycles of sine function are going to be there in 2 pi? This is one complete cycle, right? One complete cycle. So 1 would be 2. Yeah, if it is just y equals to sine x,
then one complete cycle is going to be completed in 2 pi. Half x means half a cycle is going to be completed in 2 pi. So if this is 2 pi, half a cycle is going to be completed in 2 pi, then पूरी cycle कितने में complete होगी? 4 pi. So this is 4 pi, this is 2 pi, this is 0. So this value would be pi and this value would be 3 pi. So we have the x coordinate of A, that is 3 pi. Now what's going to be the y coordinate of A? Is there any vertical transformation? The function sine x, sine half x is always going to be between -1 and 1. Now if you multiply this by k, so minus k से लेके k तक. Okay, so the minimum value is minus k and the maximum value is k. So what is the coordinate of point A? It's 3 pi comma minus k. That's the working for coordinates of point A. ठीक है? Now, part B, a sequence of the transformation. So, Yeah. can you explain the what do you call the amount of cycles again? Yes. This value, the coefficient of x, tells you how many cycles are going to be there in 360-degree or 2 pi. So half means there is going to be half a cycle in 360-degree or 2 pi. So half cycle in 2 pi, that means full cycle in 4 pi. Okay. So if this is 2 pi and this is 4 pi, then that value is going to be 3 pi. Make sense, Hasina? So the half the cycle would be like definitely 2 pi. So basically, when we are talking about a simple y equals to sine x graph, okay, we know that one complete cycle is in 360-degree, or you can say 2 pi. This is sine 1x, that means one cycle. Sine 2x का क्या मतलब होगा? There are two cycles in 360-degree or 2 pi radians. Now sine 2x means there are two cycles in 2 pi, so one cycle is going to be in pi. Sine half x would mean half cycle in 2 pi. So that's half cycle in 2 pi. So another half is going to be in 2 pi. So from here, that's total 4 pi. And so this is the minimum point. That's the x coordinate is going to be the average of 2 pi and 4 pi. Okay, clear. Part B says a sequence of transformation is applied to the curve in the following order. So the order is already mentioned. Translation of 2 units in the negative y direction. So the translation vector would be 0, -2. Reflection in the x-axis means that the function is going to be reflected in the x-axis. Is it a vertical transformation, Rafi, or the horizontal transformation? So one way horizontal. It's a vertical transformation. If anything is reflected in the x-axis, it's a vertical transformation. अगर मैं इस curve को x-axis में reflect करूंगा, it's a vertical transformation. So if this is f of x, reflect होने के बाद ये हो जाएगा minus f of x. Okay. Now these are the two transformations. We need to find the equation of the new curve and determine the coordinates of the point on the new curve corresponding to point A. Okay, so we are going to start with the function that we have, y equals to k sine half x. This is the original function. Now you are going to apply two transformations on this function. सबसे पहले क्या करेंगे? Translate in the y direction. So if f of x is translated 2 units down, so the equation of the function would become f of x plus 2 or minus 2? Minus 2. Vertical transformation है ये. ठीक है? So the entire graph is going to go 2 units down. Then what will happen? Reflection in the x-axis. The new function is now going to be multiplied by minus. So you're going to multiply the entire function by minus. Make sense? So this is the equation to start with. K sine half x. अब सबसे पहले आप क्या करोगे? You're going to subtract
minus 2. That means that the graph of k sine half x has gone 2 units down. Then you are going to reflect this k sine half x minus 2 in the x axis. So you're going to multiply the next function by minus. So the equation comes out to be y equals to minus k sine half x plus 2. That's your equation of the transformed graph. Okay? Is everyone clear with the equation? अब हमें corresponding a का point find करना है. So initially a के coordinates were 3 pi comma minus k. After the two transformation, what are the two transformation? After translation in the y direction by 2 units down, and after reflection, what do you think the corresponding coordinates of point A are going to be? A के coordinates क्या होंगे? सबसे पहले हम इसको translate करते हैं. Translation हो रही है y direction में, right? So will it affect So won't the it x be coordinate or 3 will it affect the pi y coordinate? comma k? Come again. So won't it be 3 pi comma k? 3 pi comma k किसके लिए? I mean, no, 2k. No, it is going to go 2 units down. It's not going to multiply it by 2. This value is going to go 2 units down. So पहली ट्रांसफॉर्मेशन के बाद कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे राफे. पहली ट्रांसफॉर्मेशन के बाद कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 3 पाई कॉमा माइनस के प्लस 2. सही है? माइनस के माइनस 2. हाँ, माइनस के माइनस 2. दिस मीन्स के पॉइंट ए जो है ना वो 2 यूनिट्स डाउन आ गया है. अब जब ये पॉइंट ए 2 यूनिट्स डाउन आ जाएगा, द वैल्यू इज गोइंग टू बी माइनस के माइनस 2, राइट? Now, what will happen if this point gets reflected in the x-axis now? What are the coordinates going to be of this new point? जब वो x-axis में reflect हो जाएगा तो वो ऊपर आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा. तो इसमें इसका क्या x coordinate change होगा? x coordinate change होगा अब्दुल्ला? x same रहेगा 3 pi. The y coordinate is going to change and that's going to be k plus 2. You're going to multiply this value by minus. So it's going to change. So the y coordinate is now going to be 3 pi comma k plus 2. That's the final answer. Okay, I can erase this answer now. This is the final corresponding answer. Corresponding point of A. Actually, this is not A. This is the corresponding point of A. Imad, is it clear? Yes, sir. Rafe, Hasina? Yeah, sir. Okay, I'm giving you time. Please note down the working. साथ साथ करते रहें. Sir, can you explain the thing of order again when it's both in the y-axis? How do we figure out the order? For this question, the order was already given. Yeah, but generally, how would we know? Okay, if you have two vertical transformation, if you have one vertical or one horizontal transformation, order does not matter. आप पहले horizontal कर लें बाद में vertical या पहले vertical कर लें बाद में horizontal, the order does not matter. Now order matters when you have either two vertical or two horizontal transformation. If you have two vertical transformation, then the order is just as simple as the order in the arithmetic operation. पहले multiply करोगे बाद में add या subtract करोगे. Okay, it's simple as bod mass. Not you are going to follow the order that is used in arithmetic sequences. You multiply first and then you are going to add. यानी कि पहले stretch करोगे बाद में translate करोगे. सही है? When Okay, you sir. have two horizontal transformation, it's the opposite. पहले it's the opposite order used in arithmetic. First you are going to add or subtract and then you are going to multiply, which means first you are going to
translate, and then you are going to stretch or reflect. Okay. Okay, sir. So normally in vertical, we'd move like from inside the bracket outwards, and for horizontal, we'd move the opposite, Nee, don't remember it like this. which is board mouse. Just follow the normal board mass when dealing with two vertical transformation, and just follow the opposite of board mass when dealing with two horizontal transformation. Okay, sir. Okay. Okay. All right. Done, Abdullah? Okay, कर लो. Question number 3. A curve is such that dy by dx is given. It is given that the point 1, 9 and 5, 9 lie on the curve. Find the equation. Is this the equation of the curve or is this the equation of the gradient function? No, this is dy by dx. That's Gradient the function. gradient function. To find from the gradient function, if you want to find the equation of the curve, what do you do? From dy by dx, if you want to find the equation of the curve, what do you do? If you have the curve की equation और dy by dx find करना होता तो you differentiate. तो अगर dy by dx का function है और आपको curve की equation find करनी है, you are going to integrate. Okay? So we are going to integrate this function. We are going to integrate this function to get the equation of the curve. So integral of dy by dx is y. Okay, how do we integrate this function? If you want, you can pull out this 3 outside the integral sign. That's your call. Now, integral of this linear bracket would be 4x plus 5 to the power of half plus 1. That is 3 upon 2 divided by the new power 3 upon 2 multiply by the differentiation of the bracket. 4x plus 5 की differentiation हो जाएगी 4 plus the constant of integration. So 4x plus 5 to the power of 3 upon 2 divided by 2 plus c. That's the general solution. Now to find the value of c, I must know a point on the curve. I have 2 points. I have one complete point. मुझे x coordinate भी पता है, y coordinate भी पता है. So I'm going to plug in y as 9 when x is 1. So 9 raised to the power of 3 upon 2 divided by 2 plus c equals to 9. Calculate and give me Minus the... 9 upon 2. Sorry? I got minus 9 upon 2. For the value of c? Yeah. Okay. So c comes out to be minus 9 upon 2. So equation becomes y equals to 4x plus 5 to the power of 3 upon 2 divided by 2 minus 9 upon 2. We want to find the value of a. To find the value of a, I'm going to use this point. When x is 5, y is a. When x is 5, y is a. So 25 to the power of 3 upon 2 divided by 2 minus 9 upon 2. इसको solve कर लें. Give me the value of a. There I got 58. Okay. Rest of you guys check. सही है सर. ठीक है. Note down the working.
Abdullah, done? The next question is on proving the identity. Prove that sine theta plus cos theta the whole thing square minus 1 divided by cos square theta is equals to 2 times tangent theta. Now, while solving an identity, we pick up a side. We pick up the complex side, जिसको सबसे ज़्यादा simplify करने की ज़रूरत है, ठीक है? Which side is it? Left hand Sir, side. we can't hear you. Okay. Rafe, Hasina, can you guys hear me? Oh, Yeah, sorry. sir. So that was just me. My bad. All right, all right. Sine theta plus cos theta, the whole thing square, can be expanded using the identity. That is going to be sine square theta plus 2 sine theta cos theta plus cos square theta minus 1 divided by cos square theta. So I have expanded this bracket using a square plus 2ab plus b square. Now, what is sine square theta plus cos square theta? What is sine square theta plus cos square theta? 1. That 1 and this minus 1 cancels out. So in the numerator, I'm just going to be left with 2 sine theta cos theta divided by cos square theta. And now I can cancel out the powers of cosine theta. I'm left with 2 cos sine theta upon cos theta. This sine theta upon cos theta is tangent theta. Okay, those who are done with the first part, please try the next one, where in the next part it says, hence solve this equation. Solving this equation means, hence over here is an indication, it's a command word, which means that you have to use, you can use the answer to the previous part. So the answer to the previous part was proving that this fraction was equal to 2 times tangent theta. So what I can do is I can replace this fraction by 2 times tangent theta. That's going to be equal to 510 cube theta. And the domain given in the question is from minus 90 to 90. Now, how do we solve this? क्या मुझे टेंजेंट थीटा और टेंजेंट क्यूब थीटा कैंसिल आउट करना चाहिए? क्या मुझे इसकी पावर्स को सिंप्लीफाई करना चाहिए? So it can become 2.5 equals to tan squared theta. But when you're going to do that, you're going to miss out on the angles. So you're gonna make it, you're gonna take the, you can make any, like take any on the other side and Yes. take something common, like take tan common. Right. We are always take common in case of solving trig equations, because if we cancel it out, it's not an algebraic equation. If we cancel it out, we are going to miss out on the values of the angle. Okay, so it's better to take tangent theta common, and over here I'm going to be having 2 minus 5 tan square theta equals to 0. Tangent theta is equals to 0, and 2 minus 5 times tangent square theta is equals to 0. So tangent square theta would be equal to 2 upon 5, and tangent theta is equals to 0. Clear? Now, when you take square root, do not forget writing plus minus. Okay. Now, tangent theta is equals to 0. So what's the angle theta going to be equal to? If tangent theta is equal to 0 and I need to find the values of theta between this domain, what is theta going to be equal to from this case? कैसे निकालते थे एंगल? अगर टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 0, मुझे एंगल निकालना है अब्दुल्ला, तो मुझे क्या करना होगा? Tangent theta is equal to 0, so theta would be tangent inverse of 0. So tangent inverse of 0 is basically 0. So one of the angle is 0. Is this angle 0 within the domain? So I'm going to accept this. Can there be any other angle where tangent theta is 0? 180 degree hota tha, but 180 degree is not part of the domain. Minus 180 bhi hota hai, but that's not part of the domain. So only this angle from here. From here, I'm gonna be getting multiple angles. Tangent theta is equal to plus root 5, positive root 2 upon 5, and tangent theta is equals to minus root 2 upon 5.
Now, in which quadrant is tangent theta positive? So won't you just take all coordinates? Yeah, you can take all quadrants. This is first. Tangent theta is positive in the first and the second. ठीक है, राफी बिल्कुल सही कह रहा है कि I should be taking all the coordinates, yeah, all the coordinates. So first and third में tangent theta is positive. Second and fourth में tangent theta is negative. The basic angle is going to be the same in every quadrant. How do I find the basic angle? Tangent inverse of root 2 upon 5. So what is tangent inverse of root 2 upon 5 in radians? Sorry, we need in degrees, my bad. We need in degrees, okay? Not in radians. Tangent inverse of root 2 upon 5. I'm getting 32.3. 32.3. So what are the possible angles? What would this angle be? 32.3. Should I be taking this angle? देखो थीटा की एक वैल्यू ये होगी, एक ये होगी, third one would be 180 plus, fourth one would be 360 minus. So you're only gonna take 32.3 negative 32.3. Yes, because the domain is restricted from minus 90 to 90. So only the first, if this is 0, Abdullah, this is going to be 90. Okay, this is 180, which I don't want to go into. And this is for negative angle, this is minus 90. So I'll just be needing these two angles. अब इसकी एंगल की वैल्यू क्या है 32.3 और इस एंगल की वैल्यू क्या होगी minus 32.3 negative angle. So theta values from here would be plus minus 32.3. So therefore the final answer would be 0. Final answer would be minus 32.3, 0 and 32.3. That's the working for the entire question. All right. Any questions till here? Guys, understood? Okay. Question number 5. A curve has the equation y equals to 3 upon 2x square minus 5. Find the equation of the normal to the curve at the point 2, 1, giving your answer in the form of ax plus by plus c equals to 0, where a, b and c are integers. So we need to find the equation of the normal to the curve. Once I have the equation of the curve, how can I find the gradient of the curve at this point? Differentiation. You are going to use differentiation. So you need to find dy by dx. So how do I differentiate this? Y is equal to 3 times 2x square minus 5 to the power of minus 1. Dy by dx would be minus 3 times 2x square minus 5 to the power of minus 2 times the differentiation of the inside bracket, that is 4x.
अब्दुल्ला डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं? First you multiply this with the power, then you reduce down the power of the bracket by 1, then you multiply by the derivative of the inside bracket. So we are going to get minus 12x times 2x squared minus 5 to the power of minus 2. Now I need to find the value of the gradient of the tangent to the curve at the point where x is 2. इस point पे जो tangent है, ये curve है, ये tangent है और ये normal है. मुझे इस normal की equation find करने के लिए I must know the gradient of the normal. Gradient of the normal find करने के लिए I must know the gradient of the tangent. So just plug in the value of x as 2. Give me the value of the gradient. So I got minus 8/3. Minus 8/3. So if the gradient of the tangent is minus 8/3, then the gradient of the normal line would be negative reciprocal, 3/8 हो जाएगा. 3/8. And the point where it is passing from will be 2, 1. So equation would be y minus y1 equals to mx minus x1. That's the equation of the normal. But you can't leave your answer over here in this form because they have asked for the specific form in this question. So let's simplify this. 8y minus 8 equals to 3x minus 6. 3x minus 8y plus 2 equals to 0. Note down the working piece. Okay, this is the next question. Actually, names. It is given that the coefficient of x cube in the expansion of 2 plus ax to the power 4 times 5 minus ax is 432. Find the value of the constant a. Coefficient of x cube. So 5 is going to be multiplied by the term in x cube and minus ax is going to be multiplied by the term in x square. तो इसके एक्सपेंशन में मुझे दो टर्म्स चाहिए. 2 plus ax की पावर 4 के एक्सपेंशन में आई नीड टू टर्म्स. कौन कौन से? एक है एक्स स्क्वायर वाला टर्म और एक है एक्स क्यूब वाला टर्म. एक्स स्क्वायर वाला टर्म कैसे आएगा? इट्स गोइंग टू बी 4c2 ठीक है. और एक्स क्यूब वाला टर्म कैसे आएगा? कौन सा टर्म होगा एक्स क्यूब वाला? अब्दुल्ला 4c3. तो 4c3 जब करोगे 2 to the power of 1 ठीक है and ax to the power of 3. Now I'm not concerned about the rest of the terms.
So 4C2 times 2 raised to the power of 4, that's 96 a square x square. और ये कितना हो जाएगा? Oh, sorry, my bad. 4C2 into 4, 24 होगा ये. और 4C3 कितना होता है? That's 4 a cube x cube times 2, 8. 8 से multiply, 2 से multiply होगा, it's going to be 8. Clear? अब we just don't, we need the coefficient of x cube इन दोनों को multiply करने के बाद. So if 2 plus ax to the power of 4 times 5 minus ax is being multiplied, then 2 plus ax to the power of 4 के जो terms हैं, that are 24a square x square plus 8a cube x cube, और यहाँ पे that's 5 minus ax. How can I get a term in x cube? I will have to multiply 5 with this number and minus ax with this number. So 24a square x square times minus ax plus 8a cube x cube times 5. So ये हो जाएगा minus 24a cube x cube plus 40a cube x cube. So what is the coefficient of x cube? The coefficient of x cube is minus 24 plus 40, that is 16a cube. And the coefficient of x cube was given in the question to be 432. So I'm going to equate this value to 432 to get the value of a. Three? Okay. सही है इमाद? Yes, sir, I got 3. Okay. Okay, now question number 7. The straight line y equals to x plus 5 meets the curve 2x square plus 3y square equals to k at a single point P. Find the value of constant k. If this line is meeting the curve at a single point P, तो k की value कैसे find करेंगे? What is the first thing that comes to your mind? Equate करेंगे. जब आप equate करोगे, so 2x square plus 3y square equals to k. In place of y, you can substitute x plus 5. And then you simplify this. 25. So you have 2x square plus 3x square plus 30x plus 75 equals to k. So you get 5x square plus 30x plus 75 minus k equals to 0. Now, how can I find the value of B how can I square find the minus value of k? 4ac equals to 0. क्या चीज? So you're gonna do b square minus 4ac equals to 0 because And this what is makes you say single that? point. Yes, because the line and the curve are just meeting at one point, whatever this curve is, ठीक है, or the line and if this is the line, they're meeting at a single point. So when you solve them simultaneously, the solution of this equation should have real and equal roots. और real and equal roots जब ही होंगे जब आपके पास discriminant क्या होगा इस equation का? Equal to 0. So the discriminant b square minus 4ac should be equal to 0. So b square minus 4 times a times c equal to 0. Solve this for the value of k.
k की क्या वैल्यू आ रही है? अच्छा, बाकी किसी ने सॉल्व किया? So I'm getting K as 30. k वैल्यू इज 30। ठीक है अब्दुल्ला, चेक करोगे कोई कैलकुलेशन एरर होगा? ठीक है, so k value comes out to be 30. Now the second part says find the coordinates of p 2 mark question. अब आपके पास k की वैल्यू आ चुकी है, ठीक है, आपको पॉइंट p के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। कैसे करेंगे? So you पॉइंट have the बेसिकली क्या है? equation. इंटरसेक्शन पॉइंट है फॉर द लाइन इन द कर्व। किसी भी इंटरसेक्शन पॉइंट को फाइंड करने के लिए आप क्या करते हो? दोनों इक्वेशंस को इक्वेट करते हो और साइमल्टेनियस सॉल्व करते हो, तो आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। यहाँ पे k की वैल्यू आपको पता चल चुकी है। इसका मतलब है कि अगर मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करूंगा तो मेरे पास पॉइंट p के कोऑर्डिनेट्स आने चाहिए। इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए k की वैल्यू प्लग इन करनी पड़ेगी, और k की वैल्यू आपके पास आई है 30। तो आपकी इक्वेशन क्या हो जाएगी? 5x² प्लस 30x प्लस 75 माइनस 30, 45। ठीक है, अब इस इक्वेशन को सॉल्व करके मुझे x की वैल्यूज बता दो। So x is equal to -3. So you are going to be getting just one value of x, right राफे? सिर्फ एक वैल्यू ऑफ x क्यों आ रही है? Yeah, so because it's set at one distinct point as well in the. Only one, yeah, the solutions are real and equal. That's why you are only going to have one value of x. So when x is -3, y is, you're going to plug this value back into the equation. 2. अब y equals to x plus 5. So -3 plus 5, that's 2. So point P के coordinates हो जाएंगे -3, 2. Okay. Now, question number 8. An arithmetic progression is such that its first term is 6 and the 10th term is 19.5. Find the sum of the first 100 terms of this arithmetic progression. Arithmetic progression में Sn, the sum of the first n terms का क्या formula था? n/2 2a plus n-1 times t. ठीक है, now they are talking about the first 100 terms, तो n की वैल्यू हो जाएगी 100, a की वैल्यू 6 है, 10th टर्म क्यों दिया हुआ है यहाँ पे? 10th टर्म से मैं क्या फाइंड कर सकता हूँ? T10 a और d So के you टर्म can क्या find था? your a D plus, value. yes, a plus 9d। 10th टर्म 19.5 है, a की वैल्यू 6 है, फर्स्ट टर्म is 6, so solving this will give you the value of d। 19.5 minus 6 is 13.5 divided by 9, 1.5 या 3/2। When d is 3/2, a is 6, I can easily find s 100. That's going to be 100/2, 2a plus 99d. That's 3/2. Mm-hmm. 8025. That is the sum. Okay. Now, सही है इमाद राफे? Yes, sir. Okay. A geometric progression a1, a2, a3 is such that a1 is 24
and the common ratio is 1/2. The sum to infinity of this geometric progression is denoted by S. The sum to infinity of the even number terms A2, A4, A6 is denoted by SE. Find the value of S and SE. So ये geometric progression है जिसका first term है 24, ठीक है, और common ratio है 1/2. तो next term क्या होगा, half हो जाएगा 12. उसके बाद वाला term क्या होगा 6, उसके बाद 3 and so on. ठीक है, this is the geometric progression. अब the sum to infinity is calculated as a upon 1 minus r. तो इस geometric sequence का sum to infinity क्या होगा, फर्स्ट टर्म है आपका 24, कॉमन रेशियो है 1/2. सो 24 डिवाइड बाय हाफ 48. सही है. अब एक और सीक्वेंस है SE जिसे हम कह रहे हैं SE स्टैंड फॉर सम टू इंफिनिटी फॉर द इवन नंबर सीरीज. इवन नंबर सीरीज क्या है कि इवन नंबर टर्म्स, यानी कि सेकंड टर्म, फिर यहाँ पे जो फोर्थ टर्म था 6 टर्म. सो सेकंड टर्म आपका 12 है, फोर्थ टर्म आपका 3 है, एंड इस तरीके से इट्स आल्सो अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन. सो फर्स्ट टर्म 12 हो जाएगा इस सीक्वेंस का, एंड द कॉमन रेशियो वुड बी 3/12, दैट इज 1/4. सो SE वुड बी A upon 1 minus R. So 12 divided by 3/4, that is 16. That is SE. Note down the working, please. Question 6. Okay. Question number 9. The functions f and g are defined for all real values of x by f of x is given, g of x is given, where k is constant. Given that the range of the function gf of x is greater than equal to 39, we need to find the value of k. gf of x is a composite function. gf of x का मतलब है function f into function g. So that is f followed by g. That is gf of x. For this composite function to be formed, the range of this function should satisfy the domain of this function. This is your function f. So function f needs to be inserted in function g. So gf of x is going to be 5 times x minus 1, और x की जगह क्या आ जाएगा 3x minus 2 square plus k, which is 5 times 3x minus 2 square plus, okay, yeah, let's keep it like this. Now gf of x should be greater than equal to 39. So this value should be greater than equal to 39. So 3x minus 2 the whole thing square plus k times 5 should be greater than equal to 40. And 3x minus 2 the whole thing square plus k should be greater than equal to 8. Okay. So 3x minus 2 the whole thing square plus k minus 8 must be greater than equal to 0. What form is this? ये quadratic function है, कौन सी form है ये? Completing square form. Completing square form. Perfect square form या completing square form. Okay. Now, would you agree? Okay, to find the range of, this is gf of x and it's a quadratic function. तो इसकी range greater than equal to 39 जब होगी जब ये function greater than equal to 0 होगा, और ये वाला जो quadratic function है ये greater than equal to 0 कब होगा, जब ये वाली value greater than 0 होगी. So k minus 8
k minus 8 should be greater than equal to 0. ठीक है. Now over here k value, आपको k की value figure out करनी थी. So k value would be 8. When k value would be 8, then this function would be greater than equal to 39. क्योंकि जब k की value 8 होगी तो ये function 0 होगा. ये function 0 जब होगा जब ये function 0 होगा तब g f of x will be 39 या 39 से greater. So in this case k value would be 8. This was a completing square form. मैंने इसको completing square form के तरीके से देखा है. ठीक है. Completing square form क्या थी? A times x minus a the whole thing square plus k, where this is the y coordinate of the turning point. So if I want this quadratic function to be greater than equal to 0, then this value, the y coordinate of the turning point, should be greater than equal to 0. So k value should be 8. Now for this value of k, now when we take this value of k, तो मेरे पास f of x हो जाएगा 3x minus 2 the whole thing square plus 8. G of x is 5x minus 1. अब मुझे एफ जी फंक्शन की रेंज चाहिए. एफ जी का क्या मतलब होगा? कौन सा कॉम्पोजिट फंक्शन है? फंक्शन एफ इंटू जी या जी इंटू एफ? जी इंटू एफ. सही. तो एफ जी मीन्स फंक्शन जी इंटू एफ. फंक्शन एफ में यू आर गोइंग टू इंसर्ट फंक्शन जी. 3x minus 2 the whole thing square plus 8 और यहाँ पे 5x minus 1. ठीक है. अब मुझे बताएं आगे कैसे सॉल्व करेंगे. मुझे रेंज फाइंड करनी है. रेंज कैसे आएगी? मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा. 15x minus 3 minus 2 square plus 8. 15x minus 5 the whole thing square plus 8. ये क्या है? ये भी तो एक क्वाड्रेटिक फंक्शन है, कंप्लीटिंग स्क्वायर फॉर्म है. तो कोई बता सकता है इस फंक्शन की रेंज क्या होगी? So we just plug in x as 0 and then find it. No, you don't plug in x as 0. x0 का मतलब है you are finding the y intercept. So we ये equate it कंप्लीटिंग to स्क्वायर 0 फॉर्म है. and ये कंप्लीटिंग स्क्वायर फॉर्म है. क्या आप मुझे ये बता सकते हैं कि इसके टर्निंग पॉइंट्स क्या हैं? oh 5 and 8 5 comma 8. 5 and 8. It's going to be 1 upon 3 and 8. Because देखो ये क्या है? So it's not in. हाँ, it's not in that form. तो मैं ये कर सकता हूँ. मैं I can take, देखो यहाँ पे I can, if I take 5 common, I'm going to be left with 3x minus 1. ठीक है. The whole thing square plus 8. That's going to be 25 times 3x minus 1 the whole thing square plus 8. अब मुझे ये बताओ कि इसके ये मिनिमम कर्व की इक्वेशन है या मैक्सिमम कर्व की इक्वेशन है? मिनिमम. सही है. और मिनिमम कर्व के मिनिमम पॉइंट क्या है? उसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? 1/3, 8. सही है. तो मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन इज दिस फंक्शन इज एफ जी ऑफ एक्स. इसकी मिनिमम वैल्यू क्या है? जब भी मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन की बात होगी, दैट्स द मिनिमम वाई वैल्यू. व्हाट इज द मिनिमम वाई वैल्यू? 8. और व्हाट इज द मैक्सिमम वाई वैल्यू? इंफिनिटी. सो रेंज क्या हो जाएगी इसकी? एफ जी ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 8. एफ जी ऑफ एक्स is greater than equal to 8. Make sense? Okay. Please try this part. Try करो इस part को. If gh of x is 35x plus 19, gh of x means function h is being inserted in function g. Okay. So if this is the input is h of x, it is being inserted in function g and the output is gh of x. So if I want function h back, if I want
back the input. So what I'll do, if this is your, if h of x is your input, then that's your output, right? So inverse function में क्या होता है कि if you're going to plug in the output, you're going to get back the input. So if in G inverse function, I'm going to plug in G inverse का function क्या है, x plus 1 upon 5. इसमें if I'm going to plug in 35x plus 19, I'm going to get h of x. बात समझ में आ रही है? अगर यहाँ पे x की जगह G inverse के function में x की जगह if I plug in 35x plus 19 as the input, I'm going to get h of x. 35x plus 20 divided by 5, that is 7x plus 4. So h of x क्या आ जाएगा, 7x plus 4. अब्दुल्ला मैं वापस से रिपीट कर रहा हूँ. Function h is defined for all values of x such that gh of x का function given है, that's a composite function. Find an expression for g inverse. G inverse कैसे find करते हैं? G inverse का function कैसे find करते हैं? नहीं, inverse function find करना है. तो पहले आप g of x को पहले y से सब्स्टिट्यूट करते हो और इसमें x को सब्जेक्ट बना लोगे. So ये हो जाएगा y plus 1 divided by 5 और x और y स्वैप हो जाएंगे. x becomes g inverse of x, y becomes x. ये g inverse of x का फंक्शन आ गया. अब इनवर्स का कॉन्सेप्ट क्या है? इनवर्स का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अगर एक फंक्शन g है, उसमें मैं कोई भी इनपुट प्लग इन करूंगा तो मेरे पास आउटपुट आएगा. तो g इनवर्स का फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है जिसमें जब मैं आउटपुट की वैल्यू डालूंगा तो वापस से मुझे इनपुट आ जाएगा. ओके. अब g h ऑफ x में ये कॉम्पोजिट फंक्शन है. तो फंक्शन g में इनपुट क्या हुआ है? फंक्शन g में क्या चीज इनपुट हुई है? h ऑफ x. सही है. तो जब मैं फंक्शन g में h ऑफ x का फंक्शन इनपुट करूंगा तो मेरे पास आउटपुट क्या आएगा? ठीक है. तो अब अगर मैं फंक्शन g में h ऑफ x का फंक्शन इनपुट करूंगा तो मेरे पास आउटपुट क्या आएगा? 35x प्लस 19. तो इनवर्स फंक्शन में जब मैं 35x प्लस 19 प्लग इन करूंगा तो आउटपुट क्या आएगा? h ऑफ x. मुझे क्या फाइंड करना है इस क्वेश्चन में? h ऑफ x. तो मैं इन g इनवर्स में इनपुट की जगह मैं 35x प्लस 19 जब प्लग इन करूंगा और सिंप्लीफाई करके जो मेरे पास एक्सप्रेशन आएगा वो मेरा h ऑफ x हो जाएगा. इमाद एंड राफे, आप समझ में आई बात? सर आई डिडंट गेट कि जी इनवर्स में आपने 35x आपने वो वापस डाला एंड देन यू गॉट h. हाँ, मैं यही बता रहा था. g h ऑफ x का क्या मतलब है इमाद? फंक्शन g में व्हेन यू आर गोइंग टू इनपुट फंक्शन h ऑफ x, you are going to get output 35x plus 19. ऐसा ही है? Yes. So when you are going to plug in h of x in function g, you are going to get 35x plus 19. Yes. So g inverse के function में when you are going to plug in 35x plus 19, what can you expect to have? h of x. ठीक है. ठीक है. अब the question says find h inverse h of x. So h of x find करने के लिए मैं g inverse के function में क्या plug in करूंगा? 35x plus 19. So the first part of the question was कि find the g inverse का function, which you did, and hence or otherwise find an expression for h of x. तो g inverse के function में I'm going to insert 35x plus 19. ठीक है. And then the function that I get is h of x. Make sense? Yes sir. राफे क्लियर है ये? Yeah, sir. ओके. अब्दुल्ला इसकी पिक्चर ले ली. ओके. ओके. The diagram shows the circle with center C and radius square root 20. The circle intersects the y-axis at the point A and B. The size of the angle ACB is theta. Find the equation of the tangent to the circle at the point minus 6, 9. We need to find the equation of the tangent to the circle at this point. Equation of the tangent to the circle at this point minus 6, 9. अब ये minus 6, 9 would be somewhere here or here. I don't know exact location. But ये point given है
और टेंजेंट की इक्वेशन फाइंड करनी है। तो टेंजेंट की इक्वेशन फाइंड करने के लिए, टेंजेंट इज अ स्ट्रेट लाइन, किसी भी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन फाइंड करने के लिए क्या क्या चीजें आपको पता होनी चाहिए? कोऑर्डिनेट्स या तो पता होने चाहिए, या तो 2 पॉइंट्स पता होने चाहिए, या फिर उस लाइन का ग्रेडियंट और पॉइंट पता होना चाहिए। सही है। क्या मुझे अभी टेंजेंट लाइन का ग्रेडियंट पता है? नहीं पता। ठीक है, मुझे टेंजेंट लाइन का ग्रेडियंट नहीं पता, तो मैं किस तरीके से टेंजेंट लाइन का ग्रेडियंट फाइंड कर सकता हूँ? So first, won't you just make the equation of the circle? ओके, एंड हाउ डू आई मेक द इक्वेशन ऑफ द सर्कल? Okay, because you have the center C, I do have the you have center and I radius. have the radius. So So x plus yeah. 4 the whole thing square plus y minus 5 the whole thing square equals to 20. Oh no, याद sir. है? हम्म Why can't we just find the gradient of C and this point that they've given us, and then negative reciprocate it and use these points? yes, yes, that's correct. ठीक है, वेरी गुड। अच्छा अब्दुल्ला, इक्वेशन ऑफ द सर्कल की फॉर्म क्या होती है? x माइनस ए द होल थिंग स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी द होल थिंग स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। ये हमें नेक्स्ट पार्ट में यूज करना होगा, ठीक है। इस पार्ट के लिए वी कैन जस्ट लीव दिस। राफे सजेस्टेड के सर आपको एक पॉइंट तो पता है, सर्कल पर है ये पॉइंट, सही है, लेट्स से ये पॉइंट यहाँ पर है। अब सेंटर के भी कोऑर्डिनेट्स आपको पता है और ये पॉइंट के भी कोऑर्डिनेट्स पता है। तो जब मैं इस पॉइंट को और सर्कल के सेंटर को कनेक्ट करूंगा तो ये लाइन जो है ये क्या होगी? what am I going to call this line? Radius. Do you remember the property of the radius and the tangent? What is the angle between the radius and the tangent? 90 degree. So can I say these two are perpendicular lines? तो अगर मैं ये पॉइंट और ये पॉइंट यूज करके इस रेडियस वाली लाइन का ग्रेडियंट फाइंड कर लूं, उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल करके टेंजेंट लाइन का ग्रेडियंट आ जाएगा। टेंजेंट लाइन का ग्रेडियंट और ये वाले पॉइंट को यूज करके आई कैन इजीली फाइंड द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन। ओके, so the working would be, I have the 2 points minus 6 comma 9 and minus 4 comma 5. Find the gradient. y2 minus y1 over x2 minus x1. Minus 1 upon 2. Minus 2, sorry. Minus 2. So the gradient of the tangent line would be plus 1 upon 2. और वो किस पॉइंट से पास हो रहा है? टेंजेंट लाइन माइनस 6 कॉमा 9। तो क्या ये इंफॉर्मेशन यूज करके मैं इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट लाइन फाइंड कर सकता हूँ? इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट लाइन वुड बी y minus y1 equals to m x minus x1. 2y minus 18 equals to x minus 6. 2y minus x equals to 12. एमा ठीक है? Yes, sir. Okay, now the second part says find the equation of the circle in this form. राफी ये कौन सी फॉर्म है सर्कल की? Sir, the expanded form. Expanded form. To get to this, what can we do? Either we can expand this, yeah. So equation of the circle की completing square form क्या होगी? Center है minus 4 comma 5. So that's going to be x plus 4 the whole thing square plus y minus 5 the whole thing square equals to r square. So ये हो जाएगा x plus 4 the whole thing square plus y minus 5 the whole thing square equals to 20. अब क्या करना होगा अब्दुल्ला? इसको expand कर दो। x square plus 8x plus 16 plus y square minus 10y plus 25 equals to 20. X square plus y square plus 8x minus 10y, 16 plus 25 minus 20 plus 21 equals to 0. ठीक है?
ठीक है, दूसरा तरीका क्या था? द अदर ऑल्टरनेट वे वुड बी के -2 times the x coordinate of the center. X coordinate of the center is -4. That is equals to the value of a. So a comes out to be 8. ठीक है, -2 times the coordinate of the y coordinate of the center, that is 5, is equals to the coefficient of y, which is b. So b comes out to be -10. And this value of c is always going to be equal to a square plus b square minus r square. Okay, square. So a की वैल्यू क्या है? 8 -10 स्क्वायर, रेडियस कितना है? √20, तो ये 20 हो जाएगा। 64 + 100 - 20 और स्क्वायर रूट करके मेरे पास वैल्यू आ रही है 12। ये वाली वैल्यू सर चेक करना कैलकुलेटर से। ओ -r होता है r। अच्छा, ये मैं चेक कर लूंगा ये क्या होता है। सी स्क्वायर इक्वल्स टू, ओके, ये मैं कंफर्म करके बताता हूँ। ठीक है, आई थिंक मैं इसमें मैसअप कर रहा हूँ, बट इस तरीके से एक्सपेंडेड टर्म्स निकाले जाते हैं। ओके, फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा करेक्ट टू 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। अच्छा, अब ये थीटा की वैल्यू फिगर आउट करनी है। अब्दुल्ला, थीटा की वैल्यू किस तरह फिगर आउट हम कर सकते हैं? ये डायग्राम में ये थीटा, ये ट्रायंगल बन रहा है, ये सेक्टर बन रहा है। देखो, कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फिगर आउट हम यूज कर सकते हैं। हमारे पास ये लेंथ है, रेडियस क्या गिवन है? √20। ठीक है, ये भी √20 है। तो थीटा की वैल्यू कैसे फाइंड कर सकते हैं राफे? Sir, you can make this a right angle triangle. हाउ? So if you just cut it to the chord, whatever यस, is being made, so यस, that you ये have a राइट right एंगल angle ट्रायंगल हो जाएगा। triangle with that. ठीक है, Do you have B के coordinate? Yeah. बी के और ए के कोऑर्डिनेट्स नहीं है। Yeah, but so now because we can use ratio. हमारे पास सर्कल की इक्वेशन आ गई है। अंडरस्टूड? तो Hmm. सर्कल की इक्वेशन आपके पास है x-4 द होल थिंग स्क्वायर प्लस y-5 द होल थिंग, x+4 द होल थिंग स्क्वायर प्लस y-5 द होल थिंग स्क्वायर इक्वल टू 20। एंड ये जो पॉइंट ए और पॉइंट बी हैं, ये Same y y पर value, है ना? same x value. तो x की वैल्यू क्या होगी इनकी? Sir, 0। ठीक है, y x की वैल्यू क्या होगी? 0। oh yeah, 0. So that's going to be 4 square plus y-5 the whole thing square equals to 20. Y-5 the whole thing square is going to be equal to 20 minus 16, that is 4. Y-5 is equals to +2 and y-5 is equals to -2. Y is equals to 7 and y equals to 3. तो अब this is 3 and this is 7. ठीक है, so ये वाला डिस्टेंस कितना हो गया टोटल? क्या हो गया? 3 से लेके 7 तक 4। ठीक है अब्दुल्ला, और ये, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? ये 2। अब ये 2 है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये डिस्टेंस 2 है, ये डिस्टेंस √20 है। कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में अप्लाई करके ये वाला एंगल निकाल सकता हूँ? ये एंगल के ऑपोजिट साइड ये है, हाइपोटेनस साइड ये है। बेस को तो छोड़ दो ना, ऑपोजिट Sine. और ये हाइपोटेनस। तो कौन सा ट्रिग रेशियो लगेगा? साइन थीटा। साइन थीटा किसका रेशियो होता है? ऑपोजिट डिवाइड बाय हाइपोटेनस।
तो आपके पास ये वाला एंगल जब आ जाएगा तो आप क्या करोगे, उसको डबल कर दोगे तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी। तो मैं स्टार्टिंग से ही मैं कह रहा हूँ कि ये वाला जो एंगल है मेरा, ये थीटा अपॉन 2 है। सही है। तो साइन ऑफ थीटा अपॉन 2 इज इक्वल टू ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनस √20। तो साइन इनवर्स लो इसका 2 अपॉन √20। रेडियंस में करना है, ठीक है। ये साइन इनवर्स ऑफ 2 डिवाइडेड बाय √20 मल्टीप्लाई बाय 2। सो थीटा की वैल्यू क्या आ रही है? 0.9273 आ रही है मेरे पास। हाँ बोलो। साइन इनवर्स एंगल फाइंड करने के लिए करते हैं ना। ये एंगल है और ये रेशियो है। साइन इनवर्स ऑफ दिस वैल्यू करोगे तो आपके पास ये एंगल आ जाएगा। ये एंगल है थीटा अपॉन 2 के बराबर। फिर इस एंगल को मल्टीप्लाई बाय 2 करोगे तो ये थीटा की वैल्यू आ जाएगी। सही है। तो ये जितनी भी मैंने यहाँ पे वर्किंग की है, ये वर्किंग यहाँ पे मैं कॉपी कर रहा हूँ इस पार्ट के लिए। ठीक है। तो एंगल आ गया हमारे पास। अब नेक्स्ट पार्ट में वी नीड टू फाइंड द पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ द शेडेड सेगमेंट इन द डायग्राम। थीटा की वैल्यू जब मेरे पास आ गई है अब्दुल्ला, तो मैं ये शेडेड रीजन कैसे निकाल सकता हूँ? थॉट प्रोसेस क्या है? किस एरिया को किस एरिया में से माइनस करना होगा कि ये शेडेड रीजन आ जाए? ट्राइंगल को किस में से माइनस करना होगा? शेडेड रीजन तुम्हें स्क्रीन पे दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। अच्छा, ये है शेडेड रीजन। अब सही है? अब ये रीजन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? किस में से ट्रायंगल को माइनस करना पड़ेगा? ये क्या कहलाता है? ये शेप क्या कहलाता है? So you find the area of the sector यस। and then you subtract it from the area of the triangle. So half AB sine C. यस। हाउ डू आई फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर? एरिया ऑफ, पहले पेरीमीटर ढूंढ लेते हैं ताकि हमारे पास लेंस आ जाए। ओके, फर्स्ट आई एम फाइंडिंग द पेरीमीटर। पेरीमीटर के लिए आई जस्ट नीड टू हैव आर्क लेंथ एंड दिस लेंथ। ये लेंथ है मेरे पास 4। आर्क लेंथ कैसे निकालेंगे अब्दुल्ला? सेक्टर की आर्क लेंथ कैसे निकालते हैं माद? There S is equals to R theta. S equals to R times theta. ठीक है। The radius is √20 and the angle is 0.927. So that's going to be AB length plus arc AB. AB is 4. Arc AB would be radius times the angle 0.9273. ऐड करने के बाद क्या वैल्यू आ रही है? आई एम गेटिंग 8.15 सेंटीमीटर। सही है। अब एरिया फाइंड करने के लिए क्या करेंगे? एरिया ऑफ द सेक्टर में से एरिया ऑफ द ट्रायंगल माइनस कर देंगे। ओके। अब तो एरिया ऑफ द सेक्टर का क्या फॉर्मूला होता है? सेक्टर फॉर्मूला क्या था? याद है फॉर्मूला? एरिया ऑफ अ सेक्टर इज हाफ आर स्क्वायर थीटा और एरिया ऑफ अ ट्रायंगल वुड बी हाफ ए बी साइन थीटा। रेडियस वही है जो सर्कल का रेडियस है, दैट इज √20। एंगल है 0.9273। एरिया ऑफ द ट्रायंगल होगा हाफ टाइम्स ए बी। अच्छा, अब ए बी साइन थीटा क्या है? यहाँ पे ए और ये ही लेंथ्स हैं और जो कि रेडियस ही है। तो √20 टाइम्स √20 इज √20 का स्क्वायर टाइम्स साइन ऑफ 0.9273। इसको कैलकुलेटर में सॉल्व कर लो। ये हो जाएगा 20/2 10। यहाँ से भी 10 कॉमन आ जाएगा। 0.9273 माइनस साइन ऑफ 0.9273
9.11 9 माइनस करने के बाद 300 सर। रेडियंस में आपका कैलकुलेटर 1.273 सही है। 1.273 इज द करेक्ट आंसर। सही है। इमाद सही आया। यस सर 1.27। ओके ओके, लास्ट क्वेश्चन। The diagram shows the curve with the equation for x greater than 0. The curve crosses the x-axis at the point A and B and has a minimum at M. Find the exact coordinates of M. Exact coordinates of M यानी कि minimum point find करने के लिए अब्दुल्ला क्या करना होगा? कर्व की इक्वेशन गिवन है मेरे पास और मुझे पॉइंट M जो कि मिनिमम पॉइंट है इस कर्व पे उसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने। तो मिनिमम पॉइंट हो या मैक्सिमम पॉइंट हो उन्हें हम कहते हैं स्टेशनरी पॉइंट्स। और स्टेशनरी पॉइंट फाइंड करने के लिए क्या करते हैं? इक्वेशन को डिफरेंशिएट, और डिफरेंशिएट करके dy बाई डी एक्स का एक्सप्रेशन आएगा, उसको जीरो करके सॉल्व कर देते हैं। तो dy बाई डी एक्स इस इक्वेशन का क्या हो जाएगा? 2x टू द पावर ऑफ -2/3 की डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगी? -4/3 x की पावर -2/3 -1 -5/3 -3x की हो जाएगा +1 x की पावर -1/3 -1 -4/3। अब्दुल्ला 1 की डिफरेंशिएशन क्या होगी? 0। अब मैं क्या करूंगा, मैं इसको इक्वल टू 0 कर दूंगा बिकॉज आई एम सॉल्विंग फॉर द स्टेशनरी पॉइंट। इस इक्वेशन को यार अब सॉल्व करना है। सो 4/3 x की पावर -5/3 इक्वल्स टू x की पावर -4/3। ठीक है, सारे x के टर्म्स को एक जगह ले जाओ। -4/3 डिवाइडेड बाई x की पावर -5/3 इज इक्वल टू 4/3। ये हो जाएगा x की पावर -4/3 प्लस 5/3 जो कि होता है x की पावर 1/3। अब यहाँ से पावर 1/3 एलिमिनेट करने के लिए मुझे क्या करना होगा? क्यूब दोनों साइड पे। तो ये क्या हो जाएगा? x वुड बी इक्वल टू 4/3 का क्यूब। 4 क्यूब होता है 64, 27। तो ये तो x की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब y कोऑर्डिनेट ऑफ द स्टेशनरी पॉइंट निकालने के लिए मुझे ओरिजिनल इक्वेशन में यानी कि इस इक्वेशन में x की जगह क्या प्लग इन करना होगा? 64/27। सो 2 टाइम्स x की पावर -2/3 है, -3 टाइम्स x की पावर -1/3 है और +1 है। और इसमें x की जगह मैं 64/27 प्लग इन कर दूंगा। ये कैलकुलेटर में सॉल्व करके मुझे डायरेक्ट आंसर बता दो y का। I think it's -1.8. -1/8। I think so. ओके, सो पॉइंट M के एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे 64/27 -1/8। समझ में आ गया अब्दुल्ला? ओके, सेकंड पार्ट में find the area of the region bounded between the curve and the line segment AB. Find the area of the region bounded between the curve and the line segment AB. कौन से रीजन की बात हो रही है अब्दुल्ला? Between the curve and the line segment AB, ठीक है। तो ये वो रीजन है जिसका एरिया निकालना है। अब इसका एरिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे? प्रोसेस कौन सी होगी?
मेरे पास कर्व की तो इक्वेशन है राफे, मुझे एरिया अगर निकालना है मैं क्या करूंगा? So you have to have the limits now. You have to integrate it. But the thing is, इंटीग्रेट कर, यस। say it's gonna be a -1 because this is below the axis, but we're gonna make it a positive. ठीक है, सो व्हाट इज ट्राइंग टू से इसके पहले तो आप लिमिट्स फाइंड कर लें, ठीक है। ए एंड बी रिप्रेजेंट्स द लोअर एंड द अपर लिमिट। आप इस फंक्शन को इंटीग्रेट करें विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, यू आर गोइंग टू गेट द एरिया बाउंडेड बिटवीन द कर्व एंड द एक्स एक्सिस। लोअर लिमिट और अपर लिमिट फाइंड करने के बाद आप सब्स्टिट्यूट करेंगे और आपके पास इसका इंटीग्रल का आंसर आएगा जो कि नेगेटिव होगा, बट हम एरिया को नेगेटिव नहीं लिखेंगे। अब ये नेगेटिव क्यों होगा? क्योंकि आपका एरिया बिलो द एक्स एक्सिस है। तो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए एंड बी, आई एम गोइंग टू इक्वेट दिस इक्वेशन। इस इक्वेशन में आई एम गोइंग टू इक्वेट y एज 0, ठीक है। अब चैलेंज ये है कि इस इक्वेशन को सॉल्व कैसे किया जाए। ये कोई सिंपल इक्वेशन तो नहीं लग रही, लेकिन अगर आप गौर करें इस इक्वेशन पे तो यू आर गोइंग टू रियलाइज कि इट्स अ डिसगाइज क्वाड्रेटिक। अब्दुल्ला, डिसगाइज क्वाड्रेटिक इक्वेशन पता है क्या होती है? डिसगाइज क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो इक्वेशन होती है दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू अ क्वाड्रेटिक फॉर्म। अब उसको आइडेंटिफाई करने का तरीका ये है कि पावर ऑफ एक्स शुड बी इन द रेशियो ऑफ 2:1। ये पावर है -2/3, ये पावर है -1/3। तो दोनों दोनों पावर्स का रेशियो क्या होगा? ये -1/3 है, ये -2/3 है। क्या ये 2:1 के रेशियो में है? तो आप ये करोगे कि यू आर गोइंग टू सब्स्टिट्यूट द लोवेस्ट पावर क्या है? एक्स की पावर -1/3 एस के। यू आर गोइंग टू सब्स्टिट्यूट द लोवेस्ट पावर एस के। तो फिर एक्स की पावर -2/3 क्या हो जाएगा? के स्क्वायर हो जाएगा। देखो यहाँ पे एक्स की पावर -1/3 का स्क्वायर और यहाँ पे एक्स की पावर -1/3 की पावर 1 + 1। अब मैं क्या कर रहा हूँ? एक्स की पावर -1/3 को मैं एस के सब्सटीट्यूट कर रहा हूँ। तो ये हो जाएगा 2k² -3k + 1। सही है। अब क्या ये डिसगाइज क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई? अब क्या मैं इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकता हूँ? ठीक है। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए मुझे y को 0 प्लग इन करना है और इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से या मिडिल टर्म ब्रेकिंग से सॉल्व करके k की 2 वैल्यूज आ जाएंगी। सही है। तो आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास k की जो 2 वैल्यूज आएंगी, दोज आर गोइंग टू बी 1 एंड 1/2। अब ये तो k की वैल्यू है, हमें तो x की वैल्यू चाहिए थी। x वॉज इक्वल टू -1/3। अब अब्दुल्ला मेरा x की वैल्यू कैसे आएगी? मुझे क्या करना पड़ेगा दोनों साइड पे? सिर्फ क्यूब करने से काम नहीं चलेगा ना। x की पावर -1/3 का मतलब है 1/x की पावर 1/3 और x की पावर 1/3 इज 1। तो क्यूब करने के बाद x की वैल्यू हो जाएगी 1। यहाँ पे 1/x की पावर 1/3 इज 1/2। क्रॉस मल्टीप्लाई करके x की पावर 1/3 इज इक्वल टू 2। क्यूब करने के बाद मेरे पास क्या हो जाएगा? x की वैल्यू 8। अब किसकी वैल्यू 1 है, किसकी वैल्यू 8 है? यहाँ पे ये 8 हो जाएगा। अब ये एरिया फाइंड करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेट। कर्व की इक्वेशन को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। ओके, सो एरिया फाइंड करने के लिए मुझे कर्व की इक्वेशन को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। लिमिट्स आ जाएंगी 1 से लेके 8 तक। 2x टू द पावर ऑफ -2/3 की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी? -2/3 + 1 -1/3 डिवाइडेड बाय -1/3। ठीक है। नहीं, -2/3 + 1 करोगे तो +1/3 होगा। इसी तरीके से -3x की पावर -1/3 + 1 इज 2/3 डिवाइडेड बाय 2/3 + x, और लिमिट्स आ जाएंगी 1 से लेके 8 तक। अब आपके पास अगर कैलकुलेटर है, आप कैलकुलेटर में डायरेक्ट भी इसको सॉल्व करके अपना आंसर वेरीफाई कर सकते हैं, लेकिन यूजुअली एग्जामिनर एक्सपेक्ट्स यू कि आप अपर लिमिट पहले डालें, फिर लोअर लिमिट डालें, फिर इसका आंसर निकालें, और इसका आंसर आ रहा है -0.5। अब इसका आंसर -0.5 का मतलब ये है कि ये जो इंटीग्रल है, द एरिया इज बिलो द एक्स एक्सिस।
लेकिन क्योंकि हमें एरिया फाइंड करना है, एरिया सिर्फ 0.5 यूनिट स्क्वायर होगा। ठीक है माथ? यस सर, ठीक है। ओके, सो ये पेपर था फेब मार्च 2024। कल की क्लास में 20 फेब मार्च 2023 और फिर मई जून 2023 के पेपर स्टार्ट करवा दूंगा। So have you sent this unsolved on the group? I haven't, but yeah, but I did. I think I did I send think you this. did. ठीक अगर है। नहीं है तो मुझे याद दिलाना, I'll send the unsolved as well. Okay? Okay, sir. Take care. Allah Hafiz.